Good morning. Today we are going to start the fourth video of the chapter Molecular Basis of Inheritance. आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे they are related with the genetic experiments that were done to prove that DNA is the genetic material. जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे that is going to be the Griffith experiment. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं that this is a picture of Frederick Griffith. इन्होंने इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था जिसने प्रूव किया था कि देयर इज सम मटेरियल that can change the proteins present in your body as well as the expression or the phenotype of the body. So Frederick Griffith. The next ये देखिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. इस बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस निमोनी. So the name of the bacteria was डिप्लोकोकस निमोनी. इस बैक्टीरिया की खास बात क्या थी कि इस बैक्टीरिया की दो वेराइटीज थी और या दो स्ट्रेन्स थी. द फर्स्ट वेराइटी वाज कॉल्ड a smooth strain and the second variety was called a rough strain. The smooth strain was a virulent bacteria. It means that it could cause pneumonia and it could kill the mice. So this was an infectious bacteria और इसको smooth bacteria इसीलिए कहा जाता है because इसकी सेल वॉल के बाहर एक बहुत ही स्मूथ कैप्सूल था which was made up of lipopolysaccharide. Secondly, the rough bacteria is called avirulent because it did not cause pneumonia and it did not kill mice. रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास लिपोपॉलीसेकेराइड कैप्सूल भी नहीं थी तो उसका जो शेप था दैट वाज रफ शेप. उसका it had a rough shape, therefore it was called a rough bacteria. So moving on, this is the experiment and the diagram is important. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि in the first culture medium there is smooth bacteria. इसकी सेल वॉल काफ़ी स्मूथ है and this causes pneumonia. जब ये बैक्टीरिया इस माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है the mice will die of pneumonia. चूहा मर जाएगा निमोनिया से. सेकेंड, आप देख सकते हैं कि सेकेंड कल्चर मीडियम में रफ बैक्टीरिया है. ये रफ बैक्टीरिया जब माउस को हम इंजेक्ट करते हैं तो इट विल नॉट कॉज एनी निमोनिया एंड द माउस विल लिव. इन द थर्ड पार्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यही स्मूथ बैक्टीरिया हीट किए. ही हीटेड द बैक्टीरिया एंड ही किल्ड द बैक्टीरिया. सो दीज स्मूथ बैक्टीरिया वर डेड. जब उसने यही डेड बैक्टीरिया माइस को इंजेक्ट किया तो because the bacteria were already dead, therefore it could not cause pneumonia and the mouse lived. Now in the fourth experiment, what did he do? He took a live R bacteria and a dead S bacteria. Now जैसे कि हम जानते हैं कि the live R bacteria also does not cause pneumonia, so the mice lives, and the dead S bacteria also does not cause pneumonia and the mice lives again. So इन दोनों ही कंडीशन में निमोनिया होना नहीं चाहिए और चूहे को जिंदा रहना चाहिए. द माउस शुड लिव. लेकिन जब उन्होंने लाइव आर बैक्टीरिया और डेड एस बैक्टीरिया के मिक्सचर को ऐड किया और उन्होंने ये मिक्सचर जब माउस में डाला तो उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द माउस डाइड. न सिर्फ चूहा निमोनिया से मर गया बल्कि उसकी बॉडी में लाइव एस बैक्टीरिया भी मिले. So it was a little surprising that how did this happen. क्या ये dead S bacteria जिंदा हो गए? The first option was that whether the dead S bacteria they became alive, or the second option could be the R bacteria was converted into S bacteria. So there were these two options. Frederick Griffith observed this and he finally concluded that possibly इन दोनों के सोल्यूशन को एस और आर के सोल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा केमिकल हो जो आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दे विच कॉज्ड निमोनिया एंड विच कुड किल द माइस.
सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ. अब जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, इन द फर्स्ट पिक्चर देर इज अ लाइव एस बैक्टीरिया एंड द माउस हैज डाइड, और उसके सेल्स में से लाइव एस बैक्टीरिया की कल्चर भी मिले हैं. इन द सेकेंड ऑप्शन लाइव आर बैक्टीरिया, द रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसे जब हमने माउस में डाला, इट डिड नॉट कॉज निमोनिया, द माउस वॉज हेल्दी, इट डिड नॉट डाई, और उसकी टिश्यू में से एस बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स नहीं मिले. इन द थर्ड ऑप्शन the S bacteria was killed by heat and it was injected in the mouse. Since the bacteria were already dead, तो वो निमोनिया कॉज नहीं कर पाए. द माउस वॉज हेल्दी एंड इसकी बॉडी से कोई भी बैक्टीरिया उसकी बॉडी में नहीं मिला. इन द लास्ट ऑप्शन दे टुक a mixture of R and a dead bacteria. As you can see, they took a mixture of R bacteria and S bacteria and they injected it into a mouse. And the mouse died और उसकी बॉडी में से live S strain के बैक्टीरिया मिले. They found live S bacteria. So there was only one conclusion, that it is possible that the dead S bacteria could have become alive, or the R bacteria could have converted into the live S bacteria. Right. So moving on, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया कि there is some chemical, any chemical which could change the genotype and phenotype of another cell. कोई केमिकल था जो जब कोई सेल एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका शेप बदल जाता है. So this process was called transformation. So this is also called Griffith's transformation experiment. तो ग्रिफिथ के 1928 के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि देर इज सम केमिकल विच कुड कन्वर्ट वन सेल इनटू अनदर सेल. उस टाइम पे उन्हें ये कंफर्म नहीं था कि ये डीएनए है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. Right. So this was the first experiment that we did, that there is some substance which could change the characteristic of an organism, and that is called the transforming principle or the Frederick Griffiths transformation experiment. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. Stay safe and have a nice day. Thank you.